Welcome back student, I am Santosh Misra, your business teacher, and today I am going to discuss the retail trade in our internal trade chapter. So what is the retail trade? Who is the retail traders? Retail traders generally buy goods from the wholesaler and sell to the ultimate customers. So buying of goods in large quantity from the wholesaler and selling them in a small quantity to the ultimate customer is known as a retail trade. फुटकर व्यापार. Retailers serve as an important link between the producer and final consumers and the distribution of product and services. So these are the services of the retailer to manufacturers and wholesalers. So first thing is, retailer help manufacturers to wholesale and wholesalers in the distribution of their goods and services to the ultimate consumers. तो अंतिम उपभोक्ता तक जो लास्ट में जो कंज्यूम करता है वहाँ तक ये गुड्स को क्या करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. So retailer helps manufacturers and wholesalers in promoting their goods and services. So retailer helps to the manufacturer and wholesaler in which thing, for the promotion of their goods and services. Retailer undertake personal selling efforts and thus help manufacturer and wholesaler in the process of actualizing the sale of the product. Retailer खुद सारी क्वालिटीज बताते हैं, किसको, कंज्यूमर को. दिस इज द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज डिफरेंस बिटवीन इन टू प्रोडक्ट्स. सो दे motivate to the customer for buying the goods. So in this way they helps to the manufacturer and wholesaler. Fourth point is, retailer collect and provide market information. Retailer collect and provide market information about the taste, preference and attitude of the consumers to the producer, because producer are not direct linked with the consumers. Who are dealing with the consumer? That is retailer. And retailer collect all the information about the taste, preference, what is the merit and demerit of the product from the customer, and they inform to the manufacturer to upgrade for the upgradation of their product. And in this way the manufacturer corrected their product, and after that it is good for it is on the expectation of the consumer. So sale will increase. Retailer make manufacturer and wholesaler free from the burden of the making individual sales and thus help them to operate on large scale production. So प्रोडक्शन भी करना और उसका सेल भी करना, ये एक बर्डन का काम है. तो सेलिंग रिटेलर करते हैं और जो मैन्युफैक्चरर को छोड़ देते हैं, उनके ऊपर बर्डन नहीं रहता है. उनको बस केवल क्या करना रहता है, केवल और केवल गुड्स को प्रोड्यूस करना रहता है. सो व्हाट इज द सर्विसेज ऑफ द रिटेलर्स टू द कंज्यूमर? Retailer provide goods to the consumer according to their demand. Yeah, you can say according to their requirement.
So generally retailer provides goods to the consumer according to their requirement. The requirement of different customer are different, so they ask something, some products from the to the retailer, and retailer just their demand, they provides goods according to their demand, so their requirement. So this is the services of the retailer to the consumer. Retailer deals in large variety of product of different manufacturer, and thus they offer wide selection to the consumer. Retailer have a lot of varieties of the product from the different companies, so customer has a great opportunity for the choice. Customer choose those products which are according to their requirement. So retailer provide choice to the consumer. Third is retailer provide important information about the new product to the consumer. How to use that product, what is the process for the using those product. So रिटेलर क्या करता है, बेसिकली वो बताता है कि ये देखिए नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जब हम शॉप पे जाते हैं तो हम उनके बारे में पूछते हैं ये कौन सा प्रोडक्ट आ गया। ये सारी इंफॉर्मेशन, नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रिटेलर ही कंज्यूमर को देता है, क्योंकि कंज्यूमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाता है। सो these are the services of retailers to the consumer. Now in fourth point, retailer also provide after sale services in form of home delivery, supply of spare parts and attending to the customers. So जो रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं, सेल के बाद की सर्विसेज, जैसे इसकी होम डिलीवरी, आप जाइए हम आपके घर तक गुड्स पहुंचा देंगे। सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स, यदि उसके कोई पार्ट्स वगैरह गड़बड़ हो जाते हैं तो स्पेयर पार्ट्स वगैरह देते हैं, और कस्टमर को अटेंड करते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं उस प्रोडक्ट के लिए। रिटेलर समटाइम्स प्रोवाइड गुड्स टू कस्टमर्स ऑन क्रेडिट बेसिस आल्सो, which increase their level of consumption and standard of living. They provide credit facility to the customer. In this way, if customer has not cash at a particular time, he can buy goods from the retailer on credit basis. Sixth point is retailer ensure regular availability of different goods to the customer. बहुत सारे गुड्स रहते हैं, वो सब कुछ आप अपने बगल के दुकान पे चले जाएंगे, वो रिटेलर है, आप उसके दुकान पे जाएंगे, हर वैरायटी के हर टाइप के प्रोडक्ट उसको आपके यहाँ मिलेंगे। यदि उसके यहाँ नहीं है तो वो बता देगा, शाम तक आपको मिल जाएगा। These are the services provided by the retailer to customer. Type of retailing trade. There are two types of retailing trade, itinerant retailer and fixed shop retailer. Itinerant retailers means भ्रमणशील, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, ऐसे जिनका एक मतलब स्पेस, इनका एक प्लेस फिक्स्ड नहीं होता है। और फिक्स्ड शॉप रिटेलर, इनका एक अपना दुकान होता है। तो फर्स्ट टाइप इज itinerant retailer. The retailer who do not have a fixed place of business to operate from are called itinerant retailer. They have to move from one place to another along with their goods in search of the consumers. Following are the characteristics of itinerant retailers. They are a small trader having limited resources. घूम के बिजनेस करने वाले कौन होते हैं भाई? इनका अपना फिक्स शॉप नहीं होता है, दे हैव अ लेस कैपिटल
लेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देन उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. दे जनरली डील्स इन कंज्यूमर प्रोडक्ट ऑफ डेली यूज. तो ये डेली यूज के जो प्रोडक्ट रहते हैं उनमें ये डील करते हैं. दे emphasize on providing greater customer services. तो ये बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि भाई हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, हम आपको बेटर कस्टमर सर्विसेज देंगे. दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड प्लेस टू ऑपरेट फ्रॉम. इनके पास कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है जहाँ से ये ऑपरेट करें. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इटिनरेंट रिटेलर. So I think it is enough for today. In next video I will cover the type of itinerant retailer. So thank you student, thank you so much. Please read the NCERT book first and make notes of this chapter. So thank you so much.